Hey, hello everyone. Good evening, Toronto. Again, your host is here, Max, on MaxJeffShow, only on Sports Trend. You can watch my show daily on Sports Trend YouTube channel, Facebook channel, and if you want to watch me on bigger screen, please tune into IPTV and you can tune into the channel Sports Trend. And you can watch my shows over there as well. Daily 9 p.m. I mean daily 9 a.m. recording as well. You can watch my shows over there. But if you really want to communicate with me on with my panelists, please to check out our page on Facebook and YouTube and ask any questions. Definitely, I will take your question with my panelists as well. So tonight we are going to talk about fifth day in Chennai because match is in very interesting mode. And before I talk about a match, what is happening on fifth day and what happened on like last 4 days as well, I want to talk about my sponsors for tonight's show is my first sponsor show tonight is IndvsEng Sports. If you want to buy any export quality, high quality English willow bats, custom apparel, or equipment, please contact IndvsEng Sports, our own Sultan Bhai company. Info at rsegsports.com, 647-461-3110. My second sponsor for show tonight is your Honda guy, Mohammad Rameez. He works at Classic Honda Dealership Brampton. If you want to buy new or used Honda cars with low interest rate, please call 416-569-7249. My third sponsor for show tonight is Fazan Law Corporation, a full services law firm expanding our expertise because you matter to us. Please contact Fazan 905-277-2555 or you can check out his website www.fazanlaw.com because he deals in family law, immigration law, wills and estate law, real estate and property law, and civil and criminal litigation. Okay, before I invite all of my guests, I just want to give a recap what happened yesterday in Chennai and exactly, I mean, just 2 minutes what happened in Pindi, Pakistan, outclass South Africa in last day. And it's like it was looks like that South Africa is gonna win, but Pakistan outsided and made a one-sided test match and won by 95 runs. And in Chennai, I mean, 4 day becomes like a wicket. The whole day is like wicket taking match as well. And definitely, we're gonna talk about tonight with our couple of guests that we invited across the globe. And let me welcome. See who's there. Oh, hi Martin. I- Hey Max, how are you doing? I'm doing good. How are you, man? Very good, very good. Are you Looking. feeling confident the same way the England team is confident right now, or are you shaky? I'm pretty confident. Yeah, I'm pretty confident. You know, it's going to be an exciting fifth day, so it's. I think everyone's excited to see where it could go. Um, I'd say that you know England's pretty much dominated the whole Test match, but somehow this India are still in it. So In it. it's quite amazing. Hi, But Farouk. Martin, hey, Martin, the test is in India, so India has to be in it. So you can get rid of India, right? It's in India. It's India's backyard. Yeah, they're in a like tough position right now. Let's see what happens. There are a lot of runs to be scored in one day. Only 9 wickets left. So let's see what happens. Today's show is a special show. We will be joined by two of the very prominent sports journalists. One from Pakistan, Ashraf Zaidi. He'll be joining us very soon. The second one is a surprise guest. He'll join all the way from India. We're just waiting for that person to join us, and as soon as they will join, we will. So let's till then we'll just talk about a little bit. Sure. About the Chennai test match. So, Martin, I mean, yesterday when we were talking about, like, we were talking about that England will do the follow on or not, and if they do not do the follow on, they will go for the kill and they might just go and. But suddenly, like, India changed the cards. They started with Ashwin, and they started with both spinners, Ashwin and I think the new guy in the team. And Ashwin took 6 wickets, man. And was it like in the cards? Like, I think nobody was thinking that if India gonna bowl, they gonna bowl with the spinners. Yeah, it was a bit of a surprise. Ashwin got Rory Burns off the first ball of the innings, which is only I think the third time ever that the spinner has got a first ball wicket in an innings, which got me a bit worried when you lose your first ball out, and I was worried England might collapse. To be honest, I think it was a good move to bowl the spinners. Ashwin got a lot of turn. There was a lot of the kind of footmarks which he was able to bowl into. There's not a lot of assistance for the pace bowlers, so going with the spinners is the key, and I think it'll be the key for England as well in this fourth innings.
Yeah, it was a very interesting day. We got I don't know how many wickets fell. Is it over 11, right? So Yes, no. So 10 almost, for England. I think 4 for India. I think 15 wickets day. I believe so. yeah. No. So a lot of wickets fell yesterday. I think I have a very, I mean, let me take some comments on it. Okay. Hamadin is saying, Assalamu alaikum, Hamad. Thanks for watching. Where are the regular pennies? I was looking forward to show about yesterday Pindi test. Hamadin, yes, Pindi, we won the test match and we fired the whole team. So no regular pennies here. So, okay, Jamal Vadud. Good morning. Good evening, Jamal Vadud. Situation is not good too for India, I think, because everyone knows how day 5 pitch behaved. So, at this moment right now, India needs 381 more runs. Realistically, this, I mean, I think if it's in Australia, I could have thought about it that in Australia, because we know that at 90 overs, and then because the grounds are big, team can score 380 runs. But I think in India, I don't think so that 381 can be chaseable. The only way is to defend and draw the test match. Martin, what do you think? Yeah, I mean, the highest winning score in the 4 innings at Chennai is 387. So they'd have to go like 30 runs past that. But I mean, the way England batted shows that they are a little bit worried about India, because they kind of batted another 10, 20 overs than they really needed to yesterday to close out the game and make it too difficult to make it. I don't know if they'll be able to get 381. They're going to have to start the first session without losing a wicket, or only losing 1 wicket, to get anywhere near to knocking this off. Yeah, I don't see it happening. I think it's really a question of, can India bat long enough to force a draw? And you've seen it in Australia that they can bat long. They can bat long. So they've Sure. still got a chance. Sure. Yes, Farooq, take it, please. Yeah. So seems like our guest all the way from India has joined us. So here we go. We have Mr. Vipul Vishal. Hi, Vipul, hi. welcome to the program all the way from India to Toronto, Canada. Thank you for inviting me. It's an absolute pleasure to be here. Okay, so let me give a little bit of introduction to Vipul, and he'll more elaborate on that. He says the way I got this introduction, I'm going to just say that a failed leg spinner turned into a sport journalist. Vipul Vishal has been a part of the sport industry for almost a decade as a journalist, producer, director, host, marketer, and now as an entrepreneur, having covered more than 30 sports in various capacities. Amazing. We're looking forward to hear from Vipul, because he has a very vast experience in sports journalism and covering the sports. And so, Vipul, how's everything in India? It's actually a little tense and the kind of atmosphere you'll expect before a 5th-day test match. Yeah, I mean, things are not looking really good for India in their own backyard. Thing is, after watching last 3 months cricket, I have stopped believing in actually any predictions, because anything is possible now. Because you never know. 380 on a 5th-day Chennai pitch. England is still giving India a chance by declaring so late. So even they were scared of it, that India might just chase it, right? So you never know. I mean, last time India chased that kind of a score, we scored almost 250 on last day. We are going to score more than 100 more today. So you can imagine the kind of atmosphere there must be. And I'm not at all doubtful about it, because I'm sure India has the capability right now, the kind of batting lineup we have. It's going to be an absolute rocket of test match, a perfect 5th-day lined up for all of us. Great. And with that, we also would like to welcome our very own Asher Zadi, a very veteran sports journalist, very senior journalist. Actually, I think he's one of the reasons I got into this sports journalism or sport broadcasting. So and Asher invited Vipul also. So Asher, welcome to the program. Thank you, guys. Hope everyone is going good. Hi, Ashar. Thank you, Ashur. Good. Okay. And for both of you, let me just introduce rest of my panel. Max Jeff, he's also one of our hosts at Sports Trend.
He does his own program, MaxJeffShow, and we got all the way Martin from. He's also from Toronto, but he's from England. Vipul, we especially got him. He's one of the panelists for the England matches and Australia matches. So we got like an Indian here. We got like a typical Gora guy here from and three England. Pakistanis. And then three Pakistanis, Oh my! because you don't have one both ways. Either India win or England win. You see, Pakistan is kind of my second favorite team in international cricket, so I really don't mind. I'm really happy to be in such a team. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. All right, Ashar bhai. Yes, dude. We see a lot of live quality. Like Ashar bhai, I have a first question here. Okay, Ashar bhai, that is- first, Okay. where is your hoodie? Where is your sports trend hoodie? I mean, It's left in the studio. I'm at home right now, buddy. oh, okay. You don't expect me to drive all the way in minus 13 or minus. So Vipul, I don't know what you are going through. I'm sure it's pretty warm in Delhi, but the part of the world we are in, 6 to 7 months. I mean, in compared to you, yes, but Yes. not really. it's minus not a 17 typical average. February here. Yeah, it's minus 17 or 15 average. Yeah. And God, I the can whole imagine. life is tough. Yeah, the whole life like screwed up. We have nothing to do. So we just started this show. So Oh, come on, you have the main reason to have this show is that we had match to nothing look to forward do. to. We couldn't go anywhere out. So we said, okay, let's kill time. Let's start a show. Looks like the universe has conspired for the fifth day of a Chennai Test match. Yeah. You don't really have anything to do. You can watch all day. You can watch India Okay. win. So, Vipul, from a Pakistani point of view, I'm on cloud number 9. That's we won against South Africa. So Yes, congratulations that's for you. that. And if India loses today, wow, we are going to have a rocking week. I mean, of course, like Vipul you is guys, our great guest. you guys haven't had that chance for last few months. I mean, waiting. Come on. After Huh? Adelaide, let it be Melbourne, let it be Sydney, let it be Gaba. Oh man, come on, these guys are not. Something will come. So, Martin, what do you think? If we were to have with this team a 3-match test series between India and Pakistan, where would your money be? Oh, now I better be careful here. I think I'm not really. I don't really want to back India at the moment because I want them to lose to England. But they're the form team. I think Pakistan are up and down. India are riding pretty high. So I put my money on India, but it depends where it's hosted, I guess. Ashar bhai, if I ask you the same question, Yeah. what's your answer? India and Pakistan, trust me, at this point, being very neutral, putting all my patriotism on the side, we are going to get a 3-0 hammering. Obviously, and all test matches done in 4 You're in days. your own pen, Trust me. right? I'll be very honest with this team. Yes, it was a different era. I would have been like backing my team, but with this team, no way. I think Vipul, we have been talking a lot about, and I'll come to Martin on this later on. So we have been talking about a lot of things, that how India has resurged in themselves. You've got players like Washington coming in and other guys. By the way, funny name, Washington. I mean, is there going to be a New York and Seattle or Toronto coming in? Hey, I'm not sure about that, but as I said, you'll find weird things happening in cricket these days. Okay, so I mean, on a serious note, what is the story behind India's resurgence? Is it all Rahul Dravid, or there's something else that you can add? I think, in order to understand this, you have to go back. You have to go beyond Rahul Dravid. Yes, Rahul Dravid has been there for last few years. But I think one of the good things that the infamous Indian coach Greg Chappell did to Indian cricket, that he invested a lot of his energy and mind into the domestic cricket circuit of India. He kind of laid the foundation for how India's domestic cricket is going to resurrect itself, how it is going to find its new superstars who are going to replace the then legends of the game. And since then, it has been a journey. It didn't happen within 2 years. It didn't happen within 5 years. It has happened within at least 10 to 15 years. And a lot of things have gone into it. Not just a team, not just one person. But you can say the kind of shift we have noticed in the Indian cricket's performance on the field since Ganguly's time. And then, of course, one of the finest captains of India is Rahul Dravid. Actually, if you see his captaincy tenure, the way he led India, it's not really talked about much.
but the kind of victories we found overseas under him. So of course there was a pattern developing. We needed boys. So the boys who started playing the cricket in the first part of 2020 of this 21st century, on the first decade, they are coming into play now, right? So they had their heroes. They had likes of Sachin, likes of Zahir, likes of Kumble there, leading them into it, inspiring them into it, and which is why we are seeing the results now after 10, 15, 20 years, not because it has happened overnight with just Rahul Dravid's supervision. These guys have been nurtured well. These guys, the foundation was laid pretty well, and then of course we had Rahul Dravid, like of someone like Rahul Dravid, who just was at the right place at the right moment to get this boy to become men from the boys. Vipul, a very good insight. What the debate that's been going on in Pakistan is that, Yunus Khan, right? Yunus Khan probably a year or two before offered the coaching of Pakistan's A team or the domestic setup, but the deal could not break just for 2 lakh rupees. What Yunus was demanding and what PCB was giving him, what the difference was 2 lakh rupees, right? Not a big amount. And then the stories came in that, okay, India asked Rahul Dravid to come in and do the things and change the nature of the game and uplift the Indian game. So that's been a big debate in Pakistan, that look how India has been utilizing Dravid and what we have done to Yunus. Any comments on that? When you talk about just something like 2 lakhs actually creating a massive effect in that story, we have been kind of lucky there because our board is probably the richest in the world. So Definitely. We don't really have to worry about that aspect of the game, that someone is going to get paid less or more, because Rahul Dravid would never have to deal with that in his contract when he decided to play. That would be the last thing he would have to deal with. BCCI would just pay him whatever he would want for it. Right. So money has not been the problem, but has that been the sole reason? I don't think so. I think the reason has been that, irrespective of the monetary benefits, it has been about the story that these boys wanted to write for Indian cricket. Because while growing up, we have seen how we have struggled. What were the reasons we have struggled? And we had we had likes of Sachin Tendulkar in pace bowling. We had likes of Javagal Srinath at once. We had a spinner like Kumble at once. So we had great players at different parts of the world, but never at one point of time they all came together to form a team that was going to be invincible. Now is the time where we don't have already superstars. We have every player is a potential superstar. So that is going to be the change in the way India planned its journey. Ashar bhai, I have a question. I think you have much more knowledge about it. What we all know. Yunus, if you see Yunus Khan versus Rahul Dravid, yes, both minds are same, both are legends in their own countries. But did you ever heard about that Rahul Dravid has a rift in a team, or the players are not happy with Rahul Dravid? But if you compare in Yunus Khan, whole 11, whole 12 are against Yunus Khan. Maybe that was one of the reasons that PCB never wanted, and they put a small, like a cheap issue like 2 lakhs. I mean, Yunus Khan even don't need 2 lakhs, right? Do you think, right? That was the reason. That's what I'm talking about. Well, as I said, and Vipul rightly pointed out, number one thing, I think what he's trying to say, the point that we need to understand, it's not individuals that click, it's the system that clicks. So I think what India have done, they have, and even I think Martin can put his thoughts on it. The same thing has gone into England cricket, right? Lots into nutrition, practices, TV analysts, and the whole system. They're bringing the whole system. While as we still rely on individual brilliance and God-gifted talent. When the talent is there, we win. When the talent doesn't work, we just lose out. That's been happening, the sad story with Pakistan cricket. Coming back to Yunus, yes, Yunus has been a temperamental guy. It has always been there. I remember one time that we were waiting on the ground floor of Qaddafi Stadium for Yunus Khan's press conference. And he just comes in and says, he blasts us out and saying that I'm resigning for captaincy. I said, what? Why are you resigning for captaincy? What happened? The reason was that he went to meet the chairman, and the chairman said to him that, please wait, I'm in a meeting. I'm going to meet you in the next 10 minutes. And Yunus found that offensive, and he just resigned. And he just quit captaincy. So that's the kind of temperamental guy he is. But he's also a guy who has come from the very grassroots. I mean, there was a time when Yunus didn't have money to take a bus ticket and come to the ground. He used to walk miles and miles just to get to the ground and do the practice. So he knows the system. He knows everything. It wasn't about 2 lakhs. It was basically about treating your star.
I mean, Rahul Dravid is a very big player. Yunus Khan is equally big player. Only difference that Rahul was born in India, Yunus was born in Pakistan. There's a difference, 22 crore and over a billion population. So there's a whole difference like that. I mean, performance-wise, I would rate them both on the same level. Both are same. They were excellent servants of cricket. Okay? But the only thing that happened over here, we somehow do not know how to honor our greats. That's something I really envy on the Indian side. If Sachin wants to bid farewell, if Ganguly wants to go, if Zaheer Khan wants to go, they get a pleasant exit from international cricket. Something like that doesn't happen as we don't know how to see off our cricketers. So yes, it wasn't more of a cricketing thing. It was more of an ego and giving respect to your legends. I mean, we are not known for that. Cool. So let me take some comments. So Uber Fasi is saying, and I'm going to ask all these questions to Martin before he goes to sleep. So, Martin, will England win today? Yep. I'm asking Martin. I'm going to go for yes. Why not? Okay. They've been playing well. They've got a good chance. Martin, I'm going on Bet365. I wouldn't put too much money on it. I had just one thing to ask. So, of course, England might be in a good position to win. But why do you think they delayed their declaration? If they didn't declare at all, like if they were really confident of a win, they had 500 plus, close to 600 in first inning. They had India bundled out before follow on, and then what really changed in their approach that they let India to come into a position from where they have an advantage in this game. They can either draw it or they can win it, because next 3 games are going to be very difficult for England, because India has now understood. India has played cricket in their home after a long time. So now they're going to make it even more difficult. Probably this was a good chance for England to actually register a victory in the first match of the series and put India on back foot. Why didn't he try for it? Yeah, it's a very good question there. They've still got 90. They've still got 90 overs to bat today, right? So, and they had about 10 or 15 overs yesterday. So you got over 100 overs to bowl them out. So, I mean, that's a good amount of time to bowl a team out on a 5th day pitch. Why did they spend an extra 10, 15 overs just not scoring any runs? I don't know. I think they're worried about past performances and recent performances. So past performances in India, where India have knocked off, almost 400 against England, and past performances where recent performances where India have knocked off almost 400 in the last innings. So I think but I completely agree. Like, England needs to win this Test match. They need to win it to stay in the series. Because it's only going to get harder from here. They can't, they've played pretty much as well as you could expect in a Test match. If they don't turn it into a win, what's going to happen when they don't play as well? It's going to be it's going to be a big problem. Yeah, I have a feedback here, or I mean, I can support his argument. Your question, like why they delayed the declaration and why they batted long, because Melbourne 4-day, Australia declared 329. They chased 5th day 10 hours or maybe 15 hours ahead of time, and they scored 329. So they want to make sure they know that India has capability to chase last day 300 run easily. So they want to make sure that at least draw is the only condition for them, not the draw. So I think they played they played their cards. But again, as you said, like next three Test matches. But again, people, next Test match is still in the same ground, Chennai. I can bet same result will happen, draw. The other but two this is not a typical Ahmedabad, Chennai pitch. This has not played like a typical Chennai pitch. Next might just play like it. And if that happens, India might have an advantage, because this pitch, even Ashwin, who has played almost all his life in Chennai, didn't really understand the pitch, right? So the way it behaved for the first 2 days, and then how it suddenly started doing some things in the second half of the 4th day. Do you think, I have a question here, do you think there was a ploy? Ashwin, when Kohli realized this probably, that England are not very confident of declaring here, so he made sure that Nadeem keeps bowling those outside leg stump lines so that they don't really have an option to score quickly, but in trying to do so, they started losing their wickets. Because that particular line that Nadeem started bowling in the second half of the day, that is not really a genuine left arm spinner's line in a Test match against a right hander. He was not pitching it even on the
leg stump. He was pitching it right outside leg stump, probably trying to get something from the pitch there. But of course, also blocking a lot of runs because they were not able to. He had his fielders placed accordingly, and they were not able to score runs because of that. So he made sure that England gets frustrated because they are not able to score quickly, and in order to do that, they lose their wickets also. Vipul, that's remind me, and Ashar probably remember, this is remind me of Maninder Singh, long time ago. He kept bowling like offside the leg stump. We have a joke about related to Miyadar on this one, right? Yeah. So that's like a long time ago. It was in I think it was in Pakistan sometime, or is in India. I don't remember. But we are not that old, so sorry. You don't belong to your generation. We keep it. Yeah, right. Vipul, the first thing, were you surprised to see Nadeem playing? Because there was a lot of controversy that it did raise eyebrows. Why is Kuldeep Yadav not in, and why Nadeem has been given a place? See, when Akshar was not in the team, I was actually, my preference would have been Nadeem only because of the the diversity he added to the attack. Because Kuldeep is also a Chinaman bowler, so he throws the ball the same angle as Ashwin and Washi. So we needed someone to take the ball away from the right hander, and Nadeem was the only guy in the team who could do that, right? So I mean, there was no debate there that why Nadeem played, because India needed a bowler who added a little bit of variation to the attack. We cannot have all the bowlers on a Chennai pitch bowling in the same direction. Okay, Vipul, I have a question here. Yesterday, like in our show, lots of people asked in our panelists. We have like a big group panelists, 8 panelists, and then we always talking about like why Siraj didn't play this test match. Is it like because he's not in the good list of Kohli, or is it something else? I mean, why Siraj is not in the 11? I don't think it is anything at all like that. You see, India, when Siraj played in Australia, was that the best available Indian 11 right then? I think yes. Because because everyone else were injured. Exactly. Not able to play. So that was the best available 11 to play. So when you consider playing 11, you play the best available players you have. Ashwin and Bumrah have been stalwarts of Indian cricket for past few years, and you cannot make a statement that if you get injured and you come back, if someone else you have done that much of service to Indian cricket, and if you get injured, you'll have to wait for your comeback. It cannot happen because they have earned their places in the team, and Siraj is obviously going to play lots of games for Indian cricket team, but he has to wait. It's a good problem to have for Indian cricket that someone like Siraj is actually waiting on the bench. Imagine if he also gets a game. So it's a good thing for her. I don't think it's at all a bad thing that Ishant played in his place, because Ishant is a fine bowler. I mean, 300 test wickets. And the second half, you have to divide Ishant's career in 2 halves. The first half and the second half. If you notice his second half, the kind of bowler he has actually been the best for India, even better than Bumrah, I would say. I think it's important as well. Wrong statement to make. Sorry, I was just going to say, I think it's important as well. You know, we've got 4 test matches coming up, one after the other. And I mean, India's had injury issues. You can see England is doing a similar thing. I've got Stuart Broad on the bench. You've got Chris Wokes on the bench. You've got, you're going to have enough bowlers to get through a whole series. So I mean, I think both teams have got a pretty decent depth of bowling talent. Yeah. And there are also chances that Shami might get fit by third match. I mean, it's not a surety yet. But if he gets fit, Siraj might have to wait for a bit longer, because these guys have been there and have been at it for a long time. You cannot just keep those guys out and let a guy, because Siraj is still he will be nurtured more while staying in this camp, and he'll be a player that he can get into a side any day if one of them gets injured, and that is going to be his day. It is that kind of team. Vipul, going back to the India tour, I remember a funny tweet from Vikrant Gupta, and he said there was so much injury in the India team at one time that Rehane just turned back to the dressing room and said, "Whoever is fit, come, you're playing." I was worried if Ravi Pa himself. Exactly. Because he actually has a good record in Australia also. So you never know. Ravi Shastri was ready, but his belly was not ready to play. So for comment.
Yeah, please, very please. quickly, and then especially Vipul, a lot of people, really get excited to see an Indian face in our pro-Pakistani program. So they were Dominant asking- Pakistani. Yeah, Okay, dominant would be so very what it quick is. replies, from you and Asher and anybody who wants to. So Adil, he said like Srinant or Prashad, who's your Venkatesh. favorite bowler? Yeah. Your favorite bowler, who's that? I would say Srinath. Yeah, he's been one of my favorite Indian fast bowlers. Someone who actually made sure that India starts realizing that it can actually produce world class, genuine pace bowlers. Mhm. So it would be Srinath any day for me. But he never But did yes, come coaching, on, right? But Venkatesh, and when I would love Venkatesh for just that one day, one ball in that one. oh, okay. We know what topic we're talking about. Let's move to another topic. Let's move to Okay, why another topic. France is playing every game at T20? Is it that really that good? How, sorry, I didn't get your question. Okay, why Russia Pan Well, is every game at T20 as As a a T10. T20. As a Rishabh T20. Pant. as a T20. Yeah. Sorry. As a see, I don't think Rishabh Pant plays any game like T20, T10, or any ODI. He plays every game like he knows to play. That is the only way he knows how to play cricket. Be it 2020, be it Test cricket. That is his style. He likes to take the authority. He likes to create pressure on the bowlers. And you can notice it in every format. So it's not a different game for him. He doesn't change his style really. He gets a bit more cautious in Test cricket, which is obvious. He has time, but he still doesn't mind being in the same mode, because I think it's not because of the T20 thing. It's more because of the way he plays cricket, which is why he fits perfectly in the T20 setup. It's like you can imagine Sehwag. When Sehwag played before the era of T20, he still played like that in all the format, right? And you can directly get him into a T20 Yeah. side, and he would still be the best batsman in the team. Let's say he's the Shahid Afridi of India team. He just doesn't get out that often. Yeah, He used to get out. Okay, Yes. forget the serious stuff, guys. I can't be serious that much. I already have too many tensions in life. Martin, what about the PSL 6 anthem? Did you get to hear it? Were you in the right groove? Did you get a chance to hear that? No, not yet. Seriously, dude, you're missing something cool in life. I love the colors, man. No, I love the when you see colors that. on the screen. I got to check it Okay, out. what about you? I haven't digested the song. I couldn't I listened to it many times. I was like, what the? Martin, Oh, while wow. we talk about it, have a look on it. Just Google it up. PSL 6 anthem. Love it, dude. Ashwar, I think with us actually talking about it, they might have just hit the ball out of the park, because they are getting us to talk about it. That might just be their objective. We are Yeah, talking you don't know. We as Pakistani, we have tons of problems back home, but this one anthem has got us forgetting everything and just talking about it. I mean, you slice into half. Some people love it and others like me. And we are really after it. You know, the typical Punjabi cinema thing we have in Pakistan, where there's just a bad guy with this blood-ridden, sword in his hand, and he's ready to go after the bad guys. It gives some of that kind of a touch. Martin, do it. But Asher bhai, I think every year it happened. Every year they intentionally did something. Remember last year, like the original song versus the Ali Zafar song, the whole saga is all about. So they create the hype by doing. Yeah, I tell you, they want We to love talk it. about it, because you expect Pakistan to do one thing well, nicely, and that is music, right? You expect them to come up with good music. I mean, good fast bowlers and good music. They're Good struggling. fast bowler and good music. That Good does fast happen. bowler and good. Okay. That does happen on our side. We all love Virat Kohli, right? There's one thing is very, like it's settled that we love Virat Kohli and his batting. We look forward to it. I don't like Virat Kohli. He's too easy to get out. I mean, all you need to do is give Amir a ball and he'll get him out twice in 4 balls. So what's the big deal about it? Of course. But do you think that now Pakistan team will give the Amir a ball ever now in next Virat Kohli is not a problem, yaar. I'm more concerned about Rehane and other guys. Virat Kohli is less overrated, yaar. Seriously. See, Rehane play test and Pakistan don't play test with India. So, that's the... They're a bit scared. Let's be very honest about it. They just try to find every reason to run away from the series. There might be a Virat Kohli special loading anytime soon, because he has been silent for way too long. And the day it actually happens, he's going to create havoc. He's going to break records, because that is going to be that kind of an We also have a few surprises ready. People, don't worry. We have a few surprises. But Vipul, I think for Kohli, yeah, for it could be at today, that day, or is it I'm hopeful. You see, in today's lineup, when we are talking about who all could chase,
I saw a lot of people talking about it. Very few actually mentioned Kohli, that he's also there in the lineup. You don't realize that you are not even talking about the best batsman in the team. If In the he world. fires in the world actually, and if he actually fires, you have a chase even before the day ends. You could actually win it an hour before. You must remember what all he has done during chases in the world cricket in all those years. He's kind of revolutionized is the way he carries on with a chase. He loves chasing, and which is why England were scared to declare, because they have realized what Virat Kohli has done to this cricket team. They have made us fearless in terms of chasing. We might not pose a good total batting first now, but we are actually more sure of actually chasing something down. It's that kind of a thing that has not, and it has happened because of Virat. So it actually rubs off on players, and it's going to happen. If not today, maybe next match, but it's going to happen soon. And if it happens, you can't give England any chance. That, right, Martin? I mean, that is, one guy is still silent, and England is still scared to actually declare in this match. Imagine if he starts scoring. Yeah, I mean, you look at England and India, and they're both two teams that you don't like. Somehow they manage to find wins from nowhere, right? Like, both teams are almost better when they're not winning. They're not very good at keeping it going and actually like winning a dominant victory. They're very much like backs to the wall. We need to have be struggling a bit almost to actually get that motivation to win. So I think it's the same. It's definitely a concern, but I also think it's a fifth day pitch. It's England are playing their percentages, right? They're playing the percentages. You've probably got like a 75% chance, 50% chance of a win, 40% chance of a draw, 10% chance of a lose. That's what they were pushing for. Reduce that chance of losing. But do you guys still think that 381 run gonna chase in last day? I mean, are you sure? Like 381 last day? So that's where, if you remember, India did chase down 380 on this very ground against England not too long ago. But we actually scored 256 odd on the last day, I guess. Somewhere around 250, 256 on the last day. And that was almost 15 years ago, like 13 years ago, right? Game has changed, and now you see the kind of players we have. You need a guy to be able to accelerate inning. One guy, we have got at least 4 who can actually score at 5 per over, 6 per over in this particular team. We have Pant, we have likes of Kohli, we have someone like Gill. Actually, he's still there, and he's an opener, and he has already scored a plenty of runs. And you could also notice that Pujara is playing a different game here. He is not playing his usual way. When he came, he was playing at a strike rate higher than 100. You would not actually expect that from Pujara. So everyone actually wants to go after it. And in that process, they are all kind of becoming a more like a player who could play faster than their usual self. And with that kind of attitude, when you have already the likes of player like Pant or even Washi, you could expect them to go for it. Because I have stopped believing on statistics, on averages these days, that only these many runs could be scored. Or because you saw what happened in Bangladesh. Yeah, you saw what happened in Bangladesh. I mean, you are right. Yeah, right. Last day, we need to stop predicting a game nowadays, because it's going to change any minute. So, Gopal, whatever is happening in comparing England with Bangladesh. Sorry. You said, are you comparing England with Bangladesh to No, I'm comparing that what really happened there, because even the guy who scored for them, he was not a sure shot even in the West Indies team. Yeah, definitely. His first wickets were pathetic, like not pathetic but average, and he could not have been made to the team had the main guys been there. So, but he still went for it. He went on to chase it, and he believed in himself, and he actually chased it with a double century on his debut. That too on an alien soil. You see, it's Bangladesh. They were without Shakib. You could say all that, but an alien land is always an alien land. They are not used to playing on those kind of pitches, right? So tell me that. Marty was saying something. That is where I'm coming from. That India knows this ground. India knows these conditions, and they have players who back themselves to go for such kind of chase. They are no more scared for it that they're going to play for a draw. They would rather lose, I guess, than actually going for a draw. That is the kind of team.
Tell me about this thing. We have a very talented player, but with a very unorthodox style, Fawad Alam. Did you get a chance to see him, and what Oh man, moves he's making in I'm a India? fan. I'm the kind of guy. I saw that picture also that was going rounds like the way he was standing. And if you compare to that Game of Thrones scene of Jon Snow, I mean, he Right. actually the. I mean, where was he, Ashar Bhai? I mean, why was he not there for those many years? What he That's could have 10 done years. for Pakistan cricket? Yeah, it's called an enigma. It's called Pakistan cricket politics. I mean, seriously, someone like him Uh, is still Vipul, hungry. Vipul, in simpler words, Kabila system rocks. I mean, Anyway, let's not. did Fawad make any stir in India? Were people talking? Yes, he did. People love him. People love his style. He's got. You see, Really? we all like people who are different and the way they play the cricket. We like people on those. Like we love people who make a statement. And Fawad has been making statement every match he plays. That why did you not pick me up for those 10 years? Like Definitely, you can see in his eyes that every time he plays, he scores. It is there, right? That hunger, that where was I for 10 years? And we love those kind of players who want to, you see, it's not really an underdog story, but it is an underdog story because Because there was nobody in the scene. And he suddenly, Sure. when he got the chance, he made up for it. I just have one more question for Vipul, then you guys can take it on. I simply love this Indian team. They're super talented, they're super fit, they're super athletic, they have perfect physiques, but then you have Rohit Sharma, the butter chicken. What's going on here? You You forgot notice super Sharma rich. is actually one of the finest fielders in this team, actually. I mean, that is a strange part. It is. Yes, Right? he's one of the finest fielders in this team. Very safe hands and very agile on the wicket also. So it really doesn't show because when I'm worried, I'm actually very curious about the fact that how could he, there are players of his build. They are amazing cricketers, like amazing batsmen, but they don't run. We Yeah. even had Sehwag. He was an You, amazing player. you remember RNC? Come on, Inzi bhai, we keep him out of this discussion because he's beyond those run out problems. Inji bhai, Yeah. Inji bhai. I've always been wondering. I mean, look at Rohit Sharma. Man, he's a huge guy, a proper Punjabi jet that you call, and then see his agility. I mean, it's mind blowing. Thing is, he's not always been this bulky. If you notice him a few years back, he was a very agile cricketer, a very fit cricketer, for a normal 25 years old cricketer. And I think that is where his instincts, where his reflexes develop. And now he just eats a lot to build his muscles so that he could keep scoring those sixes. Every missed hit goes for a six. It does. It So, does. Vipin, on Right. Rohit Sharma, my question is like, do you see him? Because we saw his previous innings, right? He's not scoring much. He's going to keep hold his place in the team, or you might probably give See, him a rest or Virat did mention that he's going to give these guys a long rope, like both these openers. Gill is, of course, going to get a very long rope, and he's going to perform also. With Rohit, the thing is, he has performed not too long ago, maybe 3-4 test matches before. He has performed a lot. He has performed like crazy in India in test cricket after his debut as an opener. And you have to understand that Rohit faced a similar problem in the beginning of his cricket career in ODI cricket. He was called No Hit Sharma, he's called Maggie Sharma, and whatnot, if you remember. He went on to change that story. He went on to become India's one of the finest ODI player, limited over player. So I'm going to give him a long rope here because the kind of batsman Rohit is, if he manages to build that temperament, if he manages to build that mindset again, because I don't see a flaw with his technique. There could be a thing in the past, but now I don't see a flaw with his technique. It's more about the mindset. Even in Australia, when he was playing, he was timing it beautifully. He was playing all the shots. He was actually dominating the players. And then he just did some weird stuff, right? So in this match, I think that delivery was amazing in the second inning. I mean, anybody even on his best day could have gotten out to that kind of a delivery, the way that ball spun. So I'm not blaming him yet. I'm going to give him at least 2 more matches in India. Yeah. So Martin wants to catch up with his sleep, and I know it's so Martin, what's your words? Last few words for the game, for the test match before we let you go. I would just say, if you asked me before the match that England would have
be 381 runs ahead on the last day with 9 wickets to get, I'd say thank you very much. I'll take that every time. So I would just say watch out for Jack Leach today. I think he's got a very good 4th innings record. He could be getting some turn out of those foot marks. I think the advantages with England, I think they've got good enough attack to do it. But you never know. That's the only thing. You never know. And I have one thing to say here. India might lose this match if they play for a draw, because the kind of pitch there is, if they actually go for a draw, they might lose this match. The only hope for India to survive this match is if they go for a win, create pressure on English bowlers. And as Martin said, with the patches and with Leach's record, it might be might be in for an amazing 5th-day test match. But my comment on both of you for this is the first test match of the series, and both team knows whoever win this series will go to the final. So these 2 things matter. Second, it's still a long series left. 3 test matches still left. So no team will take a risk in this test match, because look, it's very easy to get a draw rather than a chase, both teams. Look, if England go for attack, they might leak runs because they know India have all a hard-hitting batsmen. And India in the same time, if India go for the attack all the time, look, for 380, they have to go all out. They have to score at least 4 and 4.5 runs over all the time. So it means 1 boundary per over for sure, right? They might. So in my opinion, both teams will not take a risk to go all out as an attack, in my opinion, because 3 test matches left and both team knows final from this series, the finalists. Thanks, Martin. Thanks for staying extra long with us today, and good luck with England, and good luck to you. See you in the second test match. Hopefully when you wake up, you read on your mobile that England has won the game. Won the match. The first thing you do in the morning, right? Yeah. You might just go back to sleep again, man. Sorry. Yeah. And Martin, see you in second test match. Okay, man. Thanks. Hey, thanks, guys. Really nice to chat to you. Nice to meet you. Have a good one, guys. Martin, थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी, I can assume that. तो अब तो सारी बात करते हैं. अभी शो जो है, अब असली शो होने वाला है. अक्षर भाई, अब हमसे पूछे, मैं पिछले जो है 4 ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच कर लिए, ये कर लिया, तो अब हमसे पूछे ना, मुझसे और फारूक भाई से, चले अब शो असली शुरू होता है. अब विपुल भाई, अब आपसे सवालात ऐसे होंगे कि थोड़ी मुझे क्यों लग रहा है कि ये टिपिकल पाकिस्तानी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस मैं तो हम इंतजार कर रहे थे गोरे के जाने का. अब आपकी बात. मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं तो गूगल ट्रांसलेट खोल के बैठा हुआ था. वो जो मुझे बता रहा था, मैं लिख रहा था. यार विपुल भाई, ये बताओ, हमारी PSL सर पे खड़ी है, आपकी IPL सर पे खड़ी है. हमें पहला सीजन याद है. I cannot get that image out of my mind कि जब शोएब अख्तर ने 4 विकेटें ली थी और शाहरुख खान तालियां बजाता हुआ बाहर आ गया था. It was magical for the game. यार इसी तरह से कोई 5% 2% पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि किसी एक जगह पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर्स खेल लेंगे? कुछ नजर आएगा ऐसा? देखिए, ICC ट्रॉफीज एक अलग चीज होती है. अब वही रह गया. हाँ, ठीक है. बट नियर फ्यूचर में मुझे भी लग नहीं रहा है कि खेलेंगे. आई वुड लव if they play together. I would want them to play together, because जब 2 कॉम्पिटिटिव साइड खेलती है क्रिकेट मैच, तो भले ही प्लेयर्स शायद उस लायक ना हो, बट वो अपने लेवल से ऊपर उठ के गेम्स खेलती है. And that is I love about the sport, that when you give more than your 100%, and it happens on the field every time India and Pakistan plays. Considering कि पिछले कुछ सालों से उस तरह का कंपटीशन हमें नहीं मिल पाया है पाकिस्तान से, जैसा पहले. इनफैक्ट आप देखें तो हमारा रिकॉर्ड अगर ओवरऑल देखें, अभी भी पाकिस्तान आगे है. तो जिस तरह की टीम उनकी रही है पहले, और उस तरह का सडनली जो पिछले 10, 15, 20 सालों में जो चेंज आया है कि अब उस तरह की टीम डेवलप नहीं हो पाई है पाकिस्तान की, तो शायद वो मजा नहीं आएगा. कि हम उस तरह की एक ऐसी इंडियन टीम को पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते देखें जो बार बार हार रही है. बार बार जीतने में भी मजा नहीं आता है. कहने का मतलब, लाइक, हमें अच्छा लगता है जब टीम हारने वाली हो या हार गई हो और फिर जीतना है अगला मैच, उस मैच का बदला लेना है कि इस मैच को बदले इस मैच को जीतना है. इस चीज में फन है स्पोर्ट्स में. तो अगर एक टीम बार बार जीतती ही रहे तो वो वन साइडेड हो जाता है. मुझे नहीं लगता कि उस तरह के गेम हमें भी पसंद आएंगे. तो आई वुड से कि पहले पाकिस्तान को अपनी टीम को उस लेवल तक लाना चाहिए जैसे पोटेंशियल है उनमें, जैसे प्लेयर्स हैं, बिकॉज प्लेयर्स उसी लायक है पाकिस्तान के कि दे कैन गो ऑन. इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि हम जब जीतते हैं तो हम इस एक्सक्यूज को नहीं लाते, बट यू नो व्हाट हैज हैपेंड टू अस, राइट? 10 साल में कोई डोमेस्टिक 10 साल से ज्यादा
कोई लोकल हीरो थी, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, उससे हम बात किसी और बात करेंगे। लेकिन यू आर राइट, मैं जब भी हाइलाइट्स की तरफ जाता हूँ यूट्यूब पे, वन ऑफ माय फेवरेट पाकिस्तान इंडियन काउंटर इज द एशिया कप मैच इन बांग्लादेश, कि जब 74 में आउट हो गए थे पाकिस्तान टीम और विराट कोहली और आमिर के दरमियान वहां जो बैटल हुई थी बॉस, और मैंने उस दिन कहा था कि यार इस पिच पे आमिर को खेलना, दिस इज वेयर आई वुड से विराट कोहली इज अ चैंप। ठीक है, बाकी विकेट्स हैं, आपका आपने सेंचुरी बना दी, डबल सेंचुरी बना दी, लेकिन वो 74 रन का गेम बनाना। अशर भाई उसी चीज का इंतजार करते हैं कि इस तरह के बैटल्स हो, जब एक वक्त वसीम भाई, वकार और सचिन और शोएब अख्तर, सचिन, सहवाग, मतलब वो जो बैटल होता था कि किसी दिन कोई एक जीत रहा है उनमें, आज हम जीत रहे हैं तो कल वो जीतेंगे, और वो जो माइंड बैटल, वो जो स्ट्रेटजीज होती थी, उस लायक प्लेयर्स होने चाहिए, फिर मजा आता है गेम देखने में। वरना सिर्फ कहने को इंडिया के पाकिस्तान के बीच में मैच है, चलो मजा आएगा, वो फील नहीं आती है। मैंने देखा है स्टेडियम में रह के भी देखा है। करेक्ट, विपुल आप सही कह रहे हो, बिकॉज पहले जो मैचेस होते थे, मैचेस से पहले मुझे याद है अखबार के अंदर होता था टुमारो इट विल बी वसीम अकरम वर्सेस सचिन, वकार वर्सेस राहुल द्रविड़, या गंगूली वर्सेस शोएब अख्तर, राइट। अगर आज मैच भी होगा, आई डोंट थिंक सो कि खबर लगेगी एक्स वर्सेस वाई, या बस पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होगा, क्योंकि देखिए कोहली की शायद बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली का एक कंपैरिजन हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन बॉलर मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई बॉलर है जो टफ टाइम, बोलने को तो बहुत बोल सकते मैं नहीं है, लेकिन बैक टू अशर भाई कि हम लोगों के 10 साल टेस्ट मैचेस जाए हुए, देखें इंडिया ने जो बनाया वो आईपीएल से बनाया, उसको यूज किया टेस्ट मैचेस में, उनको एज मिल गया। आज हम पीएसएल बना रहे हैं, तो हो सकता है 5 साल के बाद हमारी टीम इस लेवल के ऊपर हो कि यार लेट्स ब्रिंग अ टेस्ट मैच and then let's see who's better in the test matches. But yes, white ball mein we can give a good competition, but red ball mein I don't think any team can give a good competition to India at this. अच्छा विपुल, अभी हम पैसों की बात कर रहे थे, जैसे हमारा यूनुस खान का 2 लाख का मसला हुआ, आपने भी कहा, नो डाउट मेरे ख्याल में जितना, मैं जब लास्ट टाइम 2006 में इंडिया आया था तो हम राजस्थान में थे, जयपुर में मैच हो रहा था, तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा यार कि जितना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उससे भी हाफ है, तो इमेजिन के बीसीसीआई का कितना होगा यार। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे बताओ, एक बिल्कुल लोअर लेवल का लड़का जो आईपीएल खेलता है, व्हाट काइंड ऑफ मनी डज ही टेक होम? सी नॉर्मली अगर कोई बंदा आईपीएल खेल रहा है तो आईपीएल में एक तो उनकी बेस प्राइस होती है, हाँ उतने अमाउंट तो ले ही जाते हैं, प्लस अगर ऐसे प्लेयर्स जब डोमेस्टिक खेलने लग जाते हैं, बिकॉज वो साथ में आईपीएल के फिर वो रणजी भी खेलते हैं, तो इंडिया के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो भी अच्छा मनी अर्न करते हैं। सो इफ अ पर्सन जिसने पहले एक भी रणजी सीजन खेल लिया है, आई डोंट थिंक उन्हें वरी करने की जरूरत है उसके आगे कि अब उन्हें पैसा उनके लिए मैटर होता है डिस्कशन में। यहाँ कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कितना कमाते हैं, उसके बाद उनके लिए मनी मैटर नहीं करता। बॉल पार फिगर तो दीजिए, क्या ले जाता होगा एक यार एवरेज? मैं बिल्कुल एवरेज प्लेयर हूँ। हाँ लेकिन आप, बिकॉज हर तरह के प्लेयर हैं, लाइक आईपीएल खेला हुआ एक बंदा ऋषभ पंत भी हो सकता है, जिसने हम लोग लेवल पे आ रहे हैं ना, मैं भी बिल्कुल एक एवरेज है। तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि यार हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि क्रिकेट इतनी समराइज कर दी है कि लड़के छोड़ के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, एवरेज इंडिया का प्लेयर क्या कमा लेता है साल का? देखिए एवरेज प्लेयर अगर बात करें कि एक बेसिक प्लेयर है, तो इसमें आपको एक चीज और समझना होगा कि किसी भी बॉल पार फिगर पे जाने से पहले कि आप 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर 1000 क्रिकेटर भी कमा ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज उसके बदले में कितने सारे प्लेयर्स नहीं कमा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शायद हमारे पास इतनी सारी टीम्स हैं, लेकिन फिर भी आप अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो उस हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो कमा पा रहे हैं वो देखेंगे, तो हमारे यहाँ भी बहुत खिलाड़ी हैं जो छोड़ के बाहर दूसरी चीजों में चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, पढ़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं ये नहीं देख पा रहे हैं लोग, कि कितने लोग अपना क्रिकेट छोड़ रहे हैं उस वजह से, कितने लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि कुछ स्टेट्स के पास तो रणजी टीम आज भी नहीं है, और वो टीम रही भी है तो उनके यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था, वो बिहार की रणजी टीम से स्टार्ट किया था, और बिहार 18 साल रणजी खेला ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे बिहार और झारखंड जो स्टेट है इंडिया का जो अलग हुआ था 2000 में, उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स जो भी होता है बीसीसीआई के अंदर, उस वजह से झारखंड चली गई थी जो एसोसिएशन की टीम थी, और धोनी उनकी तरफ से खेलने लग गए थे, और इस वजह से बिहार की टीम ही नहीं रही। तो बिहार जैसे स्टेट्स और भी कई सारे स्टेट्स है, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से कितने प्लेयर्स आए इंडियन टीम में, क्या नॉर्थ ईस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है?
बिल्कुल खेलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कितने प्लेयर्स आए हैं और कितने, आप देखेंगे तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे यहाँ छोटे प्लेयर्स, छोटे शहरों से प्लेयर्स आने लग गए हैं, वो खेलने लग गए हैं और वो टीम में जगह बनाने लग गए हैं और बड़े प्लेयर बनने लग गए हैं। ठीक है। लेकिन इस सब में बहुत वक्त लगा है, तो इसलिए इस चीज को मैं इस पे तोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, मान लीजिए एक बंदा हो सकता है 20 लाख 30 लाख रुपए कमाता होगा साल के, अगर एक कोई ठीक ठाक क्रिकेटर है जो ठीक ठाक आईपीएल लायक खेलने लायक हो गया है, जो आईपीएल खेल ले रहा है, तो वो साल के इतने कमा लेता होगा। लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि आप जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि कितना कमा पा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो उतने ही, उससे कहीं ज्यादा लोग भारत में छोड़ रहे हैं क्रिकेट और जा रहे हैं। लेकिन उसीलिए मुझे लगता है कि अब क्रिकेट जो है इंडिया में अब थोड़ा सा और फैल रहा है, जैसे कि आईपीएल में भी और नई टीमें आ रही हैं, क्योंकि जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है क्रिकेटर्स को भी। और ये वक्त के साथ ही होता है, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने पीएसएल स्टार्ट किया है, अभी 5-6 सीजन, 6ठा सीजन है ये, तो वक्त लगेगा। इंडिया को भी 10-12 सीजन लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। अच्छा विपुल, आई थिंक विपुल मेड अ वेरी गुड पॉइंट। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो पहले पाकिस्तान टीम कराची लाहौर होती थी। अब पेशावर से कितने लड़के आ रहे हैं मर्द, क्या हो गया? कुछ सवालात ले लीजिए, लोग सवाल, बहुत सारे सवाल पेंडिंग में, प्लीज। वो तो मैं फिल्टर किया, मैं एक सवाल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि GT20 में यहाँ पे 2 साल से जो हुए थे, तो उसमें पहले साल खासतौर पे वो आई थिंक डी स्पोर्ट्स की टीम पूरी आती थी यहाँ पे। तो एक हमारा जो फ्लोर मैनेजर था मनीष, उसने हमें बताया था कि यार तुम प्लेयर्स को तो छोड़ो, स्कोरर्स जो होते हैं दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन बात वही है विपिल वाली बात कि अगर आप एवरेज करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्सेस द पीपल हु आर मेकिंग मनी, तो मेरे ख्याल में उसमें शायद पाकिस्तान जो है वो शायद बेहतर कर जाए, बेहतर कर जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया का जो क्रिकेट का इकोसिस्टम है उसमें जितने, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि स्कोरर्स, ग्राउंड्समैन और कैमरामैन, कोई कैमरामैन, स्पोर्ट्स कैमरामैन अवेलेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि इतनी ज्यादा। और मैंने खुद देखा कि 4 या 5 साल पहले मैं दुबई में था, एक चैनल होता था दुबई का लोकल, वो इंडिया की जो लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। कोई बंदा ग्राउंड में नहीं था, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे फुल, बिल्कुल जो भी उनकी HD क्वालिटी थी, तो वो उन्होंने वो किया। लेकिन आई थिंक, लेकिन अगर एवरेज आउट करेंगे आप प्लेयर्स वर्सेस पॉपुलेशन का, तो मेरे ख्याल में होगा। यार एक भाई है, उन्होंने कोई लगता है बेहतरीन किस्म का गूगल करके हसनैन खान ने निकाल के दिया है कि अराउंड 35,000 रुपीज पर डे मैच फी फॉर रणजी ट्रॉफी एंड रुपीज 17,500 पर गेम इन मुश्ताक अली ट्रॉफी। सो भाई ये पता नहीं कहीं से लेके आया है हसनैन खान है, ये रोजाना कमेंट करते हैं ये। अच्छा, गुड हो गया बिल्कुल। तो ये क्या वो क्या रांची में एक दिन के 35,000 और मुश्ताक अली में एक दिन के 17,500 मिलते हैं। इज दैट क्लोज फिगर? मैं इस बार कमेंट करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज इनको तो इंडिया में ही रहने दो उनको भाई, हम लोग हम बोल देंगे कोई ऐसा मसला नहीं है। बट विपुल, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ये मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते? आई बिलीव ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसको कितना पैसा। नहीं, ट्रांसपेरेंट होते हैं काफी हद तक, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि इंडिया में अगर एक लड़का 2 टेस्ट मैच भी खेल जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की इनकम हो गई। यहाँ पर ये कह सकते हैं आप, क्योंकि जब कोई बंदा टेस्ट मैच खेल जा रहा है ना, तो उसके बाद एक तो उसको पेंशन मिलती है वीजा की, प्लस उसके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो सकता है, वो कोचिंग का पार्ट हो सकता है, वो कमेंट्री का पार्ट हो सकता है। इतने सारे मौके हैं एक रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए इंडिया में नौकरी पाने के लिए, क्योंकि वो नई चीजें कर सकते हैं। उनकी एकेडमीज भी बहुत वर्क कर जाती हैं, बिकॉज अगर किसी ने एक भी टेस्ट मैच खेल लिया है, यहाँ तो रणजी क्रिकेटर्स की एकेडमी इतनी वर्क कर जाती है। तो वो चीज है कि एक तो इतने सारे प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं क्रिकेट इंडिया में, उस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिटायर्ड क्रिकेटर्स को, जिसने भी इंटरनेशनल लेवल तक लायक अपने को बना लिया है। तो मेहनत की बात है, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि आप सोचिए कि 130 करोड़ के देश में आप 11 खिलाड़ी चुने जाते हैं। सही है बिल्कुल। में 2 यंगस्टर थे जो मुझे बड़े, एक तो खैर कुछ खेल भी गए इंडिया के लिए, पहले संजू सैमसन, ठीक है ना, उन पे बात करेंगे कि भाई वो बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन समहाउ कभी कुछ कर पाता है, कभी नहीं कर। दूसरे सरफराज खान जी, क्या फ्यूचर है दोनों का? मुझे सरफराज के चांसेस ज्यादा नहीं लग रहे हैं अब, क्योंकि उनका प्राइम आई थिंक चला गया है, जब वो एक्चुअली उस फेज में थे जब वो कॉम्पिटिटर्स थे इन सब के, ये जितने भी नए खिलाड़ी आज आ रहे हैं उन सब के कॉम्पिटिटर वाले रेंज थे। मे बी
बट इंडिया में आप कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 आईपीएल सीजन आपका गेम बदल सकता है। गेम तो बदल कोई बात है, लेकिन उसको अपने में काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका 1-2 नहीं, 1-2 से ज्यादा उसके आईपीएल सीजन खराब गए हैं। तो जब आप उस मोड में जाते हो तो बहुत सारे डाउट्स क्रीपिंग करने लगते हैं, कॉम्पिटिशन नए बढ़ते जा रहे हैं, अब नए खिलाड़ी इतने हैं इंडिया के पास कि एक किसी नए खिलाड़ी को 15 में भी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम पे, जितने खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में मैं सरफराज की बात अभी नहीं कर सकता ज्यादा कि वो उनका है। संजू के लिए बिल्कुल है अपॉर्चुनिटी। अभी तो कीपर्स की बात ही चालू हुई है इंडिया में, ये पोस्ट एमएस धोनी एरा है, और यहाँ पे अब तक कोई भी एक कीपर, भले ही आप ऋषभ पंत एक बैट्समैन एज अ टीम में रह भी जाए, लेकिन एज अ कीपर वो अभी भी श्योर नहीं है। उनको अभी लॉन्ग रोप किया जा रहा है, लेकिन उनकी कीपिंग भी उस लेवल तक नहीं है। तो इंडिया में एक विकेट कीपर बैट्समैन का टीम में आना, एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन के लिए अभी भी बहुत उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, और आएंगे भी, और इंडिया रोटेट भी करेंगी, उन पे काम करेंगी, उनको रखेंगी लूप में, क्योंकि एक ऐसा ना हो जाए कि एक के जाने के बाद या एक कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ना रहे, क्योंकि धोनी कभी इंजर्ड नहीं हुए। अच्छा, विकेट कीपिंग स्किल्स पे आप कैसा रेट करोगे केएल राहुल को, संजू सैमसन को और पांड को? मुझे लगता है इन सब में, और साहा मुझे लगता है कि दुनिया में भी सबसे अच्छा विकेट कीपर है, सिर्फ अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो। उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, उनकी जो टेक्निक है विकेट कीपिंग की, वो सीखने लायक है काफी सारे नए खिलाड़ियों के लिए कि विकेट कीपिंग कैसे की जाती है। वो एक ओल्ड स्कूल प्योर विकेट कीपर है। उसके बाद उनकी बैटिंग आती है, जिसपे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है। पंत की विकेट कीपिंग को मैं अभी बहुत रेट नहीं करना चाहूंगा। उनके कुछ मैचेस में इंप्रूव हो रहे हैं, बट अभी बहुत लंबी जर्नी करनी है उनको। इंडियन पिचेस पे वो जितने मैचेस खेलेंगे उतने बेहतर विकेट कीपर बनेंगे, ये मैं मानता हूं। क्योंकि आपके लिए इंडियन पिचेस पे स्पिनर्स के सामने विकेट कीपिंग करना, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होती है, किसी कहीं के भी विकेट कीपर के लिए। जब आप सब कॉन्टिनेंट पिच पे विकेट, एक चेन्नई जैसे पिच पे करते हो, आप इस तरह के पिचेस पे आप विकेट कीपिंग करते हो, तो समझो अभी ऋषभ पंत को मैं शायद 3 या 4 पे ही मानूंगा। और संजू सैमसन को मैंने बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने कभी इंडिया के लिए खेला नहीं है। और लिमिटेड ओवर्स की बात करें तो आईपीएल वगैरह में विकेट कीपिंग उतनी ज्यादा दिखती नहीं है, एक सीमित दिख पाती है कि किस तरह का विकेट कीपर है और कितना चाहिए। जब तक वो एक लंबा गेम ना खेले तब तक उसको जज करना सही नहीं होगा। विपिल, अभी ऑस्ट्रेलिया में खेला था संजू सैमसन, कीपिंग की थी उसने वहां पे? राहुल कर रहा था। राहुल कर रहा है। अच्छा विपुल भाई, थोड़ा सा क्रिकेट से हटके आपके मौजूद है तो आपसे फायदा उठा लें जरा। इंडिया की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि यार क्रिकेट तो एक तरफ है, आप किसी भी गेम को उठाते हैं उसमें स्पॉन्सर्स भी इतने सारे नजर आते हैं, वो कामयाब भी हो जाता है। रिसेंटली विल टेक द एग्जांपल ऑफ कबड्डी, कि मिट्टी से के मैट पे लाया एंड यू गाइस मेड इट आउट ऑफ फेयर। सो हाउ डज द इंडियन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वर्क? और मुझे बताइए यार कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने स्पॉन्सर्स हैं कि हर गेम में अलग अलग और इतने सारे स्पॉन्सर नजर आ जाते हैं? ऐसा है कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स सेगमेंट्स हैं, जो इंडिया का जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कई सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर, जिन्होंने बहुत वर्क किया है वर्ल्ड में स्पोर्ट्स पे, और वो जब वापस इंडिया आए हैं तो उनकी जो नॉलेज है, जिन्होंने उस नॉलेज को यूज किया है इंडियन स्पोर्ट्स को डेवलप करने में। तो जो आपने प्रो कबड्डी की बात की, प्रो कबड्डी को स्टार ने बनाया है बेसिकली। स्टार ने उसको एक छोटे से गेम से उसको इतना बड़ा बनाया है, उनको भी वक्त लगा है। मैंने भी बहुत काम किया है बैकग्राउंड में प्रो कबड्डी के साथ, उनके काफी सारे कैंपेन्स के साथ। तो मैंने नोटिस किया है कि जब आप एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हो, आपको पता है कि इस स्पोर्ट्स में इंडिया में पैसा है, आना चालू हो गया है, तो ये वक्त बहुत पुराना नहीं है। इससे पहले अगर आप देखें 20 साल पहले, तो आप कितने इंडिया के खिलाड़ी को जानते थे क्रिकेट के बाहर के, जो सच में अच्छे खिलाड़ियों के रूप में फेमस थे? गिने चुने 1-2 स्पोर्ट्स में होते थे। अभी के टाइम पे हर स्पोर्ट्स में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आने लग गए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि इंडिया का जो ग्राउंड लेवल पे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बहुत काम हुआ है। और उस पर काम हुआ है तो उससे जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के में कि अपॉर्चुनिटीज होना। आप कितने भी बड़े तुर्रम खाओ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हो किसी कंट्री में, तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने उस चीजों पे काम किया है, जैसे कि अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। मैं उसमें मीडिया टीम का पार्ट था। मैंने क्लोजली देखा है कि इंडिया में एक फुटबॉल मैच में, वो भी अंडर-17 मैच में, दिल्ली जैसे शहर में, जो ठीक से आईपीएल में भी दर्शक नहीं जुटा पाता है, पूरा ग्राउंड पैक्ड था जेएलएन स्टेडियम।
इंडिया के पहले मैच में, और शोर था हर तरफ से। मैं बीच ग्राउंड पे था और मैं सुन नहीं पा रहा था अपने कलीग्स की आवाज, इतना शोर था। बच्चे आए थे देखने के लिए, छोटे लोग आए थे देखने के लिए, स्कूल किड्स आए थे देखने के लिए, और वो अंडर 17 का वर्ल्ड कप था, ना कि एक फुल फ्लेजेड वर्ल्ड कप, या अंडर 19 भी। बच्चे खेल रहे थे और बच्चों को देखने के लिए इतनी बड़ी भीड़ आई थी कि जेलन स्टेडियम पैक था। तो उसके पीछे जिन लोगों ने काम किया है, वो हम काफी सारे उसमें मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने उनकी जर्नी देखी मैंने कि किस तरह उन्होंने 8 महीने 1 साल उसके पीछे, और सिर्फ उस पे काम नहीं किया है कि सिर्फ टूर्नामेंट पे काम किया है, उन्होंने उसके अराउंड जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है उस पे बहुत काम किया है, उस चीजों पे काम करते हैं। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो इंडिया का जो तरीका है वो काफी ग्रास रूट ओरिएंटेड हो रखा है आज के टाइम पे, जिस वजह से जो एक कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, ना कि आप ऊपर से प्लग करो टॉप को तो आपको धीरे धीरे नीचे की चीजें आपके पास आएंगी, नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे चीजें को देख रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है, बच्चों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, तो लाजिमी है कि बच्चे अच्छे खेलेंगे और उनको देखने वाले आएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो कोई काम सही नहीं तो हम फौरन जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते थे कि यार ये सारा कसूर उनका है। तो इस सारे काम में गवर्नमेंट पेट्रोनेज भी रही है। मुझे लगता है आप देखेंगे बीसीसीआई में तो गवर्नमेंट का बिल्कुल जीरो इन्वॉल्वमेंट रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी स्पोर्ट्स डेवलप हुए हैं, गवर्नमेंट पेट्रोनेज मिली है सब बाकी स्पोर्ट्स के, ओके गो अहेड एंड डू इट। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, बहुत सारे स्पोर्ट मार्केट मैनेजमेंट फर्म्स भी हैं जिन्होंने ग्रास रूट डेवलपमेंट पे काम किया है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम किया है पिछले कुछ सालों में, कि इंडिया के हर अब शहर में स्टेडियम्स और फैसिलिटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटीज लड़कों के लिए, वो सब डेवलप होना चालू हुआ है। और आपने सही कहा, ब्रांड स्पॉन्सर्स इतने हैं इंडिया के पास आज के टाइम में। देखिए, बड़ा देश है, ज्यादा कंपनियां हैं, ज्यादा लोग बड़े होना चाहते हैं, एम्बिशंस हैं सब में, तो खेल सबसे बड़ा माध्यम होता है मुझे लगता है सब तक पहुंचने का, क्योंकि खेल सब कुछ को ट्रांसेंड करता है, किसी भी बाउंड्री का मोहताज नहीं होता है खेल। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है स्पोर्ट्स के थ्रू, और जब क्रिकेट सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा है, तो बड़ी कंपनियां सारी पकड़ लेती हैं क्रिकेट को, सैचुरेट हो जाता है, तो जो कंपनीज नहीं घुस पाती हैं क्रिकेट में, उनके लिए बाकी के बाकी खेल पड़े हैं और वो उसमें घुस रही हैं। और उसमें बैडमिंटन देख लीजिए आप, कबड्डी देख लीजिए आप, इवन फुटबॉल देख लीजिए, आज के टाइम पे सब खेलों में अब ब्रांड्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन एक अभिशाप भी कह सकते हैं किसी देश के लिए, और वही इंडिया की ताकत भी बन जाती है कभी-कभी। बिल्कुल, एक बात मैंने पूछनी है, देखिए इंडिया में आप जैसे बता रहे हैं कि हर गेम में वो छोटी-छोटी गेम में जाके अप्रोच कर रहा है और यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डू यू सी के आगे विद इन 15 इयर्स इंडिया कैपेबल होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल की बिड के लिए और ओलंपिक्स की बिड के लिए, जिस तरह वो काम हमें भी नजर आ रहा होता है कि हर स्पोर्ट्स में अब इंडिया नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो वही है कि अगले 15-20 सालों में वो उस पर काम करें। इसीलिए जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना था, कोरोना के कारण हो गया, अंडर 17 अंडर 9 अंडर 23 था शायद, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, उस पे काम चल रहा था। तो इंडिया ने अपना रास्ता बनाना चालू किया है उस लाइन में कि वो बिड कर सके। उसके लिए पहले उन्हें यूज टू कराना होगा कंडीशन से फीफा को कि इंडिया कर सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और कॉमनवेल्थ तो इंडिया करा चुका है ऑन अ वेरी गुड स्केल। सो एशिया कप वगैरह भी, एशियन गेम्स हुए इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एशियन गेम्स हो चुके हैं, एशियन गेम्स हो चुके हैं। आई थिंक इट्स जस्ट वन मोर स्टेप। तो अशर भाई वो लेकिन जो दो ये चीजें ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। देखिए एशियन जो है वो एशियन बॉडी कर लेती है, लेकिन ये वर्ल्ड कप की बिडिंग में ही नाम आ जाना, तो जैसे लाइक मुझे पता है जब फीफा की बिडिंग हो रही होती है वो नाम ही लाइक कंट्रीज के नाम ही फेमस हो जाते हैं अगर बिड में 4 नाम आ जाए। वो अलग बात है किसी को मिले ना मिले। ये एक बहुत बड़ा लीप होता है किसी भी कंट्री के लिए कि आप सब तैयारी के बाद अचानक से उस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पे आप जब जाते हैं तो बहुत बड़ा लीप होता है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके लिए प्लानिंग आज शुरू होती है तो 20 साल बाद एक्चुअली वो आपको दिखती है। विपिन यार एक छोटा सा टूर्नामेंट, मुझे लगता है कि इंडिया की प्लानिंग थोड़ी पहले शुरू हो चुकी है। विपिन एक छोटा सा टूर्नामेंट हमारे पास भी होता है यार, G20, उसमें भी थोड़ी बहुत हम क्रिकेट खेलते हैं यार, उसमें भी आ जाओ कभी, 2-3 प्लेयर्स ले आओ, मजा आएगा जरा। आए भाई युवराज सिंह 2 प्लेयर आए थे रिटायर्ड, युवराज सिंह और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो फास्ट बॉलर था इंडिया का पुराना। युवराज तो मुझे याद है, दूसरा मुझे भी याद नहीं है, मुनाफ नहीं वो बड़ा अच्छा सा नाम है भाई का, गोला गंडा टाइप का। चले गए ना, मैं कह रहा हूँ विपिल को इतना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है यार, 2-3 प्लेयर आओ जरा, मजा आएगा, हम भी खेल लेंगे। विपिल आपका मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं अभी देख रहा था, मैं साइड में मैच लगा हुआ है, तो
गिल आपका बड़ा अच्छा बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसका बल्ला सादा था, स्टिकर नहीं लगा था, इतना वो करके आया। अभी आज मैं देख रहा हूँ तो आज भी उसका सादा ही है भाई, क्या मसला है? हम कोई वेट कंपनी गेन कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि भाव बढ़ाना। ओ, तो ये भी खेल हो रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो इतना पेशेंट है इनके स्पोर्ट्स एजेंट, इतने स्ट्रांग हैं कि वो कह रहे हैं कि सब्र करो करो सबर, क्योंकि भाव इंतजार का बढ़ेगा। फल मीठा होता है। ओ, नहीं, that's उनको nice. लगता है, कॉन्फिडेंट है कि उनको मैचेस मिलेंगे भाई। अगर वो पाकिस्तान होता ना तो पता नहीं होता ना कि अगला मैच में आप खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। जी, और उसकी श्योरिटी है कि वो बहुत साल खेलेगा इंडिया के लिए, खेलेगा। वो टाइम खराब भी खेले उस पे दिया जाएगा, काम किया जाएगा उसके साथ। तो यही अच्छा चले, बिल्कुल यही बात मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा। 2-3 साल पहले हम लोग पृथ्वी शॉ की बात करते थे, अब शॉ जो है वो तो आई मीन क्या हुआ, बहुत यार आप मतलब जिससे स्टांस, जैसे स्टांस होता है ना, ऐसे सचिन के बाद अगर स्टांस किसी में नजर आया है वो इसमें आया था। आई थिंक लॉस्ट टैलेंट और व्हाट। देखिए, पृथ्वी शॉ के साथ जो प्रॉब्लम है, पृथ्वी शॉ एक अच्छे खिलाड़ी थे, उसमें कोई शक नहीं है, और उनकी जो, जैसे आपने बताया कि उनके खेलने का तरीका, स्टांस काफी सिमिलर लगता था उनके। सचिन उनको काफी पसंद भी करते हैं, उनके साथ उन्होंने उनको बहुत सारे काम किया है, क्योंकि वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे पृथ्वी शॉ। क्या होता है ना कि अब जब किसी खिलाड़ी को, किसी भी इंसान को, ये सिर्फ खेल के साथ नहीं होता है कि आपको जब बहुत कम उम्र में शोहरत मिल जाती है तो मुश्किल होता है उसके साथ जीना। एक इसमें उसकी खुद की गलती भी नहीं होती है कई बार, क्योंकि आपको जब कम उम्र में शोहरत मिलती है तो आपके अराउंड जिस तरह का माहौल होता है, आप जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जैसी चीजें होती है, आप ईगो कह सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर बिल्डअप होता है जो कई बार आपके प्रदर्शन पे भी इफेक्ट डाल सकता है। मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी शॉ के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत ही सीरियस क्रिकेटर है अभी भी। कुछ इश्यूज जो हुए पिछले 1-2 साल में उसके साथ, उस वजह से कई बार किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है कि आपके माइंडसेट पे असर पड़ सकता है। उनको जरूरत है एक या दो अच्छे लंबे डोमेस्टिक सीजन की, और जैसा दम है उस खिलाड़ी में वो आएगा वापस, वो भी उस कॉम्पिटिटर होगा ओपनिंग पोजीशन के लिए। लेकिन उसको जरूरत है एक या दो अच्छा सीजन खेलने की, डोमेस्टिक क्रिकेट की लंबे फॉर्म की, जो जितना वो काम करेगा। सराश आयर को कहाँ देखते हो आप, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ तो? श्रेयस अय्यर बोलेगा। हाँ, सॉरी, अय्यर, श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर, वो तो काफी अच्छा खिलाड़ी है, और इंडिया ओडीआई टीम को तो वो पार्ट भी रहा है अब, पार्ट भी रहा है और है भी अभी भी नंबर 2। तो व्हाई नॉट रेड बॉल? आप किसको रिप्लेस करेंगे इस टीम में आज? हाँ, ये भी है। ये अच्छा जवाब मतलब दिया आपने। इंडिया की प्रॉब्लम तो यही है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, लेकिन आप किसके लिए जगह बनाएंगे, किसको हटा हाँ, करके? टेस्ट वनडे में तो आई थिंक ही इज अ गुड बात सुनो कैंडिडेट, मैक्स, बट बहुत क्रिकेट बात हो गया, मुझसे हजम नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई, वो विपिल भी बेचारे भूखे होंगे। अब एक्चुअली मैच भी स्टार्ट हो गया है तो विपिल, नाश्ते में क्या करेंगे आज बताइए? नाश्ते में फिलहाल तो किसी एक का सैकड़ा। ये अच्छा रहेगा। देख ले, ये ना हो कि वो फ्राई व्राई करके कुछ और ले आया वो एंडरसन नई बॉल से। मैं उसको मैच देखने दीजिए, मैं भी जाके फरूख भाई चाय बनाऊं तो काफी। लेकिन यार एक बात मैं कन्विंस हूं, आई लव टॉकिंग टू विपिल, ही हैज सच अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, नॉट बिकॉज यू आर विद अस, यू टॉक वेरी वेल एंड आई सी पीपल। तो यार विपिल को कम से कम एवरी फोर्टनाइट एक दिन हमारे लिए टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अशर भाई, थैंक यू सो मच और भाई, और थैंक यू सो मच मैक्स। जी बिल्कुल, आज का शो तो बड़ा काफी हमने फॉर्मल किया है, इतना हम लोग शो फॉर्मल करते नहीं है। अशर भाई तभी नहीं आते हैं क्योंकि हम बहुत कैजुअल शो करते हैं, तो अगली दफा थोड़ा सा ना हम भी धीरे धीरे माहौल में ढल जाएंगे। ये बेवकूफ लोग हैं, ये समझते हैं हमें क्रिकेट आती है। ये इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी यार? नहीं, पता है क्या है, एक्चुअली सबको आती है क्रिकेट। हमारे क्रिकेटर है एजाज अहमद, याद है एजाज अहमद हमारे क्रिकेटर होते थे, वो कहते हैं असल में हर कोई एक्सपर्ट है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। इस पे मैं बताऊं कि अजहरुद्दीन आए थे 2 साल पहले यहाँ पे, एक कैंप, उनसे बात हो रही थी तो कहने लगे यार, तो ऐसी यही बात हुई फैन वगैरह की, कहने लगे यार मैं बिल्कुल पीक पे जब था, यानी कि शुरू में ही बिल्कुल, तो कहने में एक दिन अपने घर से निकला, मैच था, दूसरे दिन मैं घर से निकला तो पान वाला खड़ा हुआ था, कहने लगे यार अज्जू भाई क्या कर दिया, इस शॉट को यूं क्यों मारा, आपको यूं मारना था। तो कहने लगे यार स्टोरीज भी हैं जिसमें एक्चुअल क्रिकेटर्स को कुछ अच्छे एडवाइस मिल गए हैं सड़क चलते, तो इसमें कोई गिल्ट नहीं कि ऐसा कहीं भी हो सकता है। और बात ही है कि हम दोनों देशों में ऐसा प्यार है क्रिकेट के लिए कि हर नुक्कड़ पे आपको एक क्रिकेट एक्सपर्ट मिलता है, और आप कहीं भी बैठ जाइए, आपको अगर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए
तो आपको बस क्रिकेट एक तीन किसी तो मैच यहीं के पे ही बाद है। विपुल, बस एक मैं छोटे से 2 सवाल करूंगा, जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग, आपका सवाल दे जवाब दें, इट्स अप टू यू। कोई ऐसा प्लेयर इंडिया का रीसेंट टाइम्स में जिसको चांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, आपको पता है? डोमेस्टिक आप ज्यादा, कोई ऐसा प्लेयर जो चांस? मुझे लगता है कि एक प्लेयर जिसको चांस मिलना चाहिए था थोड़ा पहले ही, लेकिन मिलेगा, वो है सूर्य कुमार यादव। मुझे लगता है ओके, सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही S5 अमेजिंग प्लेयर है, और स्काई। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो शायद अगले इस लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए हों, बिकॉज उनको बुलाया गया है एनसीए में फिटनेस टेस्ट के लिए। और कोई एक ऐसा प्लेयर जिसको चांस नहीं मिलना चाहिए था लेकिन वो टीम में खेल गया लॉन्गर पीरियड? और बहुत सारे ऐसे इसके लिए मेरे पास ऐसा है कि उस खिलाड़ी ना सिर्फ वो खेल गया, बल्कि वो इंडिया के लिए लिमिटेड ओवर में सबसे अच्छा बॉलिंग का रिकॉर्ड बना गया। बिन्नी रॉजर बिन्नी, नहीं, उनके सुपुत्र अच्छा रॉजर अच्छा, ओके ओके ओके। मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्टुअर्ट बिन्नी इंडियन टीम के उस पार्ट वक्त क्यों नहीं, थे, क्यों उस उस वक्त दिन। ऑप्शन नहीं थे, लेकिन उस वक्त ऑप्शन हाँ, नहीं होते थे ना। आप जब आप बात कर रहे हो बात है। 8-10 साल पुरानी और बात कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, उनके नाम पे रिकॉर्ड है इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स का। लेकिन बताइए। देखो, आप वो बात करो लाइक वे बैक बात करो 8-10 साल पहले, जब ना लाइक अब तो एक पूरी लाइन बनी हुई है। लेकिन 8-10 साल पुरानी बात भी नहीं है, वो हाल फिलहाल की बात है। वो आई गेस 15 के वर्ल्ड कप में गए हैं खेलने के लिए इंडिया की टीम में वो। यार मुझे मैक्स तुम्हारी बात को मैं कहूंगा, एक इंडियन बॉलर जो मुझे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरा बस चलता मैं खुद अपने हाथ से उसको निकालता, वो था अजीत अगरकर। करा दिया यार। ये पता है अजीत सुंदर अगरकर लगता के था। बारे में आई थिंक ये परसेप्शन है, ये एक परसेप्शन है ऐसा कि लोगों को उसको देख के लगता नहीं है उनको कि वो एक्चुअली फास्ट बॉलर है, लेकिन आप देखेंगे तो उनके नाम में जैसे रिकॉर्ड्स हैं, वही ना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है जैसे रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पे कि वो फास्टेस्ट 50 विकेट्स। यार और विपुल मैं सही बताऊं, यू नो कि पाकिस्तान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स ना। जी अजीत जी जी, अगरकर जैसे लड़के को किसी प्रॉपर सिटी की टीम में जगह ना मिले, इतने बॉलर भरे हुए, बट लेकिन अल्लाह आप ये भी देखिए ना कि इंडिया के लिए कितना मुश्किल रहा है वो दौड़, कि वो दौड़। इंडिया के पास हर वक्त सिर्फ एक अच्छा बॉलर होता था, हाँ। सिर्फ श्रीकांत एक, या दूसरी प्रसाद, साइड होता ही नहीं था। एक टाइम अल्लाह पे जिसको इज्जत दे भाई, श्रीकांत, मैं और आप जहीर, कुछ नहीं कर सकते। जी। करेक्ट। अब चलिए, अब तो गोल्डन डेज हैं, अब देखते हैं। अब देखते क्या आता है। चल चलें। फारूक भाई दे दें यार, खुदा का चलें, हाँ बिल्कुल चैनल बिल्कुल। बना दें यार। और आइएगा विपुल ने बिल्कुल, नाश्ता शो नहीं में किया, उसका आइएगा बीपी लो हो रहा है। बिल्कुल। सही है। नहीं, सही है, चलें अशर भाई, बिल्कुल थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू, सो मच। अच्छा, थैंक यू विपिल, और हम आपको फिर मौका देंगे, और हमारी जो है ना वो दुआएं और जो शुभकामनाएं हैं वो तमाम इंडिया वालों को, और जो जो मिले उन्हें हमारे शुक्रिया, शुक्रिया आपके साथ भी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कल के जी। मैच के लिए, और थैंक यू। वैसे ही हो गया। चलें थैंक जी, यू। स्टे इन टच। चलें जी फारूक भाई।